ओके, सो अगर आप इस फंक्शन को देखें जो आप लाइक अपडेट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज लिटरली द सेम दैट वी यूज्ड फॉर लीनियर रिग्रेशन। जो लीनियर रिग्रेशन के केस में हमने डेरिवेटिव देखा था, ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो हमने लीनियर रिग्रेशन के केस में देखी थी। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज कि जो लीनियर रिग्रेशन था उसमें ये जो फंक्शन था दैट वाज सिंपली w डॉट x प्लस b, जबकि यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे ये फंक्शन क्या है कि w डॉट x प्लस b और फिर हमने उसको सिग्मॉइड से गुजारा, राइट? So the basic computation remains the same, but the function that is used to compute the predictions is different. For linear regression, it is simply w dot x plus b, whereas for logistic regression, it is w dot x plus b passed through the sigmoid function. So that's the difference. Otherwise, it is pretty much the same thing, right? So like linear regression का function ये लिखा हुआ है हमने और logistic regression का function ये लिखा हुआ है। सिर्फ इसी चीज़ का फर्क है, बाकी सब कुछ ठीक है। So like the same concepts are monitor gradient descents, vectorized implementation and like feature scaling। जो बाकी चीज़ें हमने linear regression में डिस्कस की थी कि आपने gradient descent में learning curve को monitor करना है कि like loss जो है वो आपका आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? दूसरी चीज़ हमने कही थी कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन वेक्टराइज होनी चाहिए। वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन का क्या फ़ायदा होता है? दैट इट इज़ वेरी फास्ट। सो दैट इज गोइंग टू बी द सेम कॉन्सेप्ट एज वी डिस्कस्ड इन लीनियर रिग्रेशन। और तीसरी चीज़ फीचर स्केलिंग। ऑलवेज स्केल योर फीचर्स सो दैट ग्रेडियंट डिसेंट वर्क्स फास्ट। फीचर स्केलिंग का बेसिक फ़ायदा क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट फास्ट कन्वर्ज कर सकता है। अगर फीचर स्केल नहीं होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट ग्रेडियंट डिसेंट स्लो काम करेगा। सो यू वांट इट टू वर्क फास्ट एंड फीचर स्केलिंग रियली हेल्प्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी एड्रेस इज ओवरफिटिंग। like overfitting is a kind of like in a way a subjective problem जिसके बारे में हम हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता कि हम कोई क्रिस्प सी बात कह सकें, but we will try to define कि overfitting क्या होती है और क्यों होती है और क्यों अच्छी नहीं होती और हम इसे avoid कैसे कर सकते हैं, right? So let's just get on with the problem of overfitting. अब जो हम मॉडल्स ट्रेन करते हैं उन मॉडल्स को ट्रेन करने का बुनियादी पर्पस क्या है? हम ये चाहते हैं कि हम उनको फ्यूचर में प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकें और हम ये चाहते हैं कि जो प्रेडिक्शंस वो फ्यूचर में करें वो प्रेडिक्शंस अच्छी प्रेडिक्शंस हो, क्लोज टू एक्चुअल। अच्छी प्रेडिक्शन का मतलब क्या है कि एक्चुअल के यानी हम ये कहते हैं कि यार मेरी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई, तो इसका मतलब क्या होता है? वी नो दैट। तो हम यही चाहते हैं कि जो प्रेडिक्शन हम करें वो ठीक साबित हो। अब इसके लिए हमारे पास है क्या? हम माजी का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में आने वाली चीज़ों को इन्हीं माजी की लर्निंग्स की बेस पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब लाइक लर्निंग के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। यानी एक, हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से लर्न करें, राइट? लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम स्पून फीडिंग के आदी हो जाएं, राइट? सो एक अच्छे तरीके से एक चीज को कन्वे किया जाए, सिखा दिया जाए, एक मेथड को बता और समझा दिया जाए ताकि आप जनरल सेंस में चीज़ों को समझ सकें और मुस्तकबिल में अगर आपके सामने उसी तरह का कोई अनसीन प्रॉब्लम आए, अनसीन प्रॉब्लम, आप उसको सॉल्व कर सकें। ये है रियल वैल्यू इनकलकेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी स्पून फीडिंग क्या होगी? एक सवाल सॉल्व किया, जी समझ आ गया, हाँ जी अब याद रहेगा, हमें अभी सॉल्व कर लेंगे। दूसरा सवाल सॉल्व किया, ये भी हो गया। अगर आपको 10, 15, 20 सवाल सॉल्व कर दें और स्टूडेंट वो सवाल सॉल्व करके आपको दिखा दे, गुड। लेकिन अगर आप उसे एक अनसीन क्वेश्चन दें और वो कहे नहीं ये तो अनसीन है, ये तो मैं नहीं कर सकता, दैट्स नॉट लर्निंग। तो जब हम ओवरफिटिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम इसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब एक चीज़ क्या है, हम ओवरफिटिंग के अगेंस्ट एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं अंडरफिटिंग, ठीक है?
अंडरफिटिंग का मतलब ये है कि चीज ठीक से सिखाई ही नहीं जा सकी या ठीक से सीखी ही नहीं गई, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां अगर आप देखें तो ये आपका डेटा है, ये क्रॉसेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है कि इस डेटा के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा कर्वी है, ठीक है। आपका जो मॉडल है फर्ज करें वो एक स्ट्रेट लाइन फिट करता है इसके ऊपर, यानी लीनियर रिग्रेशन अगर आप सादा इस्तेमाल करें सादा फीचर के साथ तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही फिट करेगा, ठीक है। आप कहते हैं कि ये हमने स्ट्रेट लाइन फिट कर दी और ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से ये मॉडल कर्वी है और आगे से थोड़ा सा इधर को जा रहा है, जबकि ये आपका मॉडल जो है कह रहा है मैं तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऊपर नहीं करना, राइट। It is not really capturing the concept or the trend of the prices in the real environment. Yani it is learning, but it is learning like a duffer, like not learning really, right? You get my point? On the contrary, आपके पास एक मॉडल ये है, right? It says, yeah, I seem to get that this model is this like data is moving more of a shape of a curve, right? ये ज़्यादा एक curve की shape में जा रहा है, right? So that means it's as if you are trying to like understand the trend in the data better, and you are also thinking about the generality. कि लाइक डेटा का जो ट्रेंड है मैं इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ कि मुझे मुस्तकबिल में इस ट्रेंड की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट भी करनी पड़ सकती हैं, राइट। ये दूसरा मॉडल हो गया, राइट। दिस मॉडल द फर्स्ट मॉडल जिसको हमने कहा था अंडरफिटिंग, एक ये मॉडल हो गया। अच्छा, इसको अभी हम नाम नहीं दे रहे, इसको भी हम नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा मॉडल आपको नजर आ रहा है व्हिच इज दिस। अगर आप इस मॉडल को देखें तो ये जरा अजीबोगरीब सा मॉडल है, ठीक है। इट सेज ओके यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से इसके बाद ऊपर जाना है, एकदम ऊपर चले जाओ, ऊपर जाना है, एकदम ऊपर चले जाओ, ठीक है। उसके बाद ये देखता है कि नहीं डेटा सीधा ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। इट सेज नहीं कैप्चर ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि सीधा इधर से इधर जाने की बजाय कहता है नहीं इधर से मैं ऐसे नीचे की तरफ ट्रेंड नीचे की तरफ कैप्चर करके फिर आगे जाऊँ, एंड सो ऑन, राइट। लाइक व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस मॉडल इज इट इज अ लिटिल टू विगली, a little too sensitive, a little too overfitting, right? अब इस overfitting मॉडल को अगर आप देखें तो ये तमाम पॉइंट्स को टच कर रहा है, तमाम पॉइंट्स को टच कर रहा है। इसका मतलब है लॉस जीरो होगा। अगर आपका जो डेटा है आपका जो मॉडल है वो आपके तमाम डेटा पॉइंट्स को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी प्रेडिक्शंस और आपके एक्चुअल आंसर्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है आपका लॉस जीरो होगा। पर आप यही चाहते हैं कि आपके मॉडल के अंदर लॉस कम से कम हो ताकि उसकी लर्निंग अच्छी हो रही हो, तो यहाँ लॉस एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा। प्रॉब्लम इसका क्या है, ये जनरलाइज नहीं करना, यानी ये हर सवाल को इतने अच्छे से इसको सॉल्व करवाया गया है कि इसको जब नेक्स्ट सवाल दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए तो ये भी आप It's like that we become sticky to the things that we see and we live with that only. We don't want to think beyond that. That's what overfitting is, right? Somewhat like sometimes I also prefer to give this kind of example. जैसे आप कभी-कभी अपने क्लासरूम्स में देखते हैं तो आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं जो हर बात का जवाब ये दे रहे होते हैं कि मामा से पूछ के बताओ, मामा ने मना किया, मामा नाराज होंगी, मामा कहती हैं ठंडी चीज़ें नहीं खाती, मामा कहती हैं गर्मी में बाहर नहीं करते, right? So you find that kind of kid, right? What is the problem with that kid? वो जो बातें कर रहा है गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन वो ओवरफिट हो गया, right? So जब भी उसके साथ एक सिचुएशन आती है जहाँ उसको फैसला करना होता है, वो अपनी बात बताने की बजाय मामा की बात बताता है। So वो डिपेंडेंट हो गया, उसने लर्निंग बहुत बेहतर कर ली है, उसने कोई भी बात अभी तक जो आपसे की है वो गलत नहीं थी, लेकिन वो ओवरफिट हो गया, उसमें अपनी डिसीजन मेकिंग इनकॉर्पोरेट नहीं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक बच्चा है जो आता है साथ वाले के बैग में हाथ मारता है, उसका लंच निकाल के खा लेता है, राइट?
दूसरे की रबड़ देखता है, रेजर देखता है, उसको रेजर को तोड़ के ऐसे फेंक देता है, ठीक है। तीसरे बच्चे की पेंसिल लेता है, उसका शार्पनर लेता है, उसको बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और कहता है ले खत्म कर देते हैं, राइट। बाहर आता है तो एक बच्चे के 2-4 थप्पड़ मार देता है, वो बच्चा अंडरफिट है, उस बच्चे की लर्निंग हुई ही नहीं, उसने चीजें सीखी ही नहीं, राइट। So what we want is, we want something in the middle, that you learn well such that you are neither underfit nor overfit. So we say, you can call it like it's kind of just right, right? Because आपको underfitting करेंगे तो आप ठीक prediction भी नहीं कर सकते, overfitting करेंगे तो शायद predictions कर ही नहीं सकते, right? Because आप generalize नहीं कर रहे, तो आपको चूंकि generalize करना है, अच्छा यहाँ हम नीचे टर्म देखें, इसको कह रहे हैं कि आपको generalize करना है such that you can predict for future as well. इसको हम कहते हैं the model has high bias, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, मिसाल के तौर पे अगर आप हाउस प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो आप फर्ज करें, ये अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये जो साइज ऑफ द हाउस है ना, ये मैटर तो करता है लेकिन इतना मैटर नहीं करता, सो आप बायस हैं, आपने पहले से एक बायस डेवलप कर लिया। जैसे एक स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि यार आमतौर पर जो स्टूडेंट होते हैं ना टफ नहीं होते, सो यू फाइंड समबडी आर्गिंग लाइक दैट, यार तुम्हें पता है ज़्यादातर लोग ऐसे डफर से ही होते हैं, लोगों के दिमाग को कोई ठीक है, तो लोगों को ज़्यादा समझना नहीं चाहिए। नाउ व्हाट वी से इज, without understanding people, you are passing a judgment. So this is a high amount of bias that you have without learning properly. On the contrary, we have high variance. High variance is like that you want to step forward, but you say, नहीं रुक जाओ यार, कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं ये चीज़ ना हो गई हो, ये भी तो हो सकता है। So you want to like move on with your decision making, but like something is stopping you at every step because you are too cautious about things, right? So we say that this model has high variance. Now you don't want to have underfitting or high bias. You don't want to have overfitting or high variance. आप इतनी variations में भी नहीं करना चाहते. So you want to have a model that is just right, and the just right is the one which is generalized, which has generalized, right? So if you like look at this like tangible example, जैसे हम मिसाल के तौर पे ट्यूमर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, whether it is malignant or not, right? So say you have like two types of examples. For example, these are like the blue circles indicate the benign cases, and the red crosses indicate the malignant cases, for example, ठीक है? So अगर आप इसके ऊपर एक लीनियर मॉडल फिट करेंगे तो आपको पता है लीनियर मॉडल तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फिट करेगा। सो लाइक यू से w1x1 plus w2x2 plus b, and like you pass it through the logistic function. So logistic function will always give you a straight line, right? So in this straight line you see that 1 2 3 4 5 6 7 blue circles are misclassified, and like 2 or 2.5 red crosses are also misclassified, right? So like you are not trying to like strive harder to understand the trend in the data. On the contrary, look at this model, right? This model is going like it is trying to classify every point correctly. इसने जो decision boundary आपको दी है उसमें एक भी point misclassify नहीं होगा, right? उसने हर जगह जाके जितना बड़ा कट मारा जा सकता था वो कट मार के उसने वो लाइन ड्रॉ की है ताकि हर पॉइंट की क्लासिफाई, ठीक है। यहाँ पे वैसे और ये मॉडल इस तरह का बनता कैसे है, हमने पहले भी बात की थी कि जब आप सिंपल फीचर्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक जितने भी फीचर्स हैं उनके साथ वो वेट्स हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपको कर्वी लाइंस चाहिए तो आपको पॉलिनोमियल फीचर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देखें क्या करें, w1x1 plus w2x2 plus w3x square x2 plus w4x1 square x2 square plus w5x1 square x2 cube plus w6x1 cube x2 plus so on plus b. So you are using a very high degree and multiple combinations of polynomials and powers of features here. So like जितना ज़्यादा आप degree of polynomials बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी boundary
कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, तो इतनी ज्यादा कर्वी इन शेप आपको बाउंड्री मिलेगी। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी फिटिंग बेहतर से बेहतर हो सकती है, बट द थिंग इज आपको ये इंश्योर करना है दैट इट इज नॉट लीडिंग टू ओवर फिटिंग लाइक दिस, राइट। अच्छा, अगर आप इस मॉडल को देखें, ये मॉडल कहता है ये डेटा स्ट्रेट लाइन फिट नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा कर्वी शेप में जाएं तो ठीक होगा। यहाँ पे दो पॉइंट मिस क्लासिफाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सर्कल और ये सर्कल, ठीक है, थोड़ी सी मिस क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, लेकिन ये जनरलाइज है, राइट। किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स अचीव करे, बल्कि उसका पर्पस ये होता है कि वो जनरलाइज कर सके ताकि फ्यूचर में ठीक काम करे, राइट। यहाँ अगर आप देखें तो अगेन हम पॉलिनोमियल फीचर इस्तेमाल करें, लेकिन महदूद से। फॉर एग्जांपल w1x1, w2x2, w3x1 स्क्वायर एंड w4x2 स्क्वायर एंड देन w5x1 into x2, that's it. So we have used polynomials but limited. यहाँ we can have even more complex boundary if we increase the power of polynomials here, so that will become even more difficult to compute, but that will give you even more complex boundaries as well, right? So like अगर आप अपने डेटा के ऊपर बहुत एग्जैक्ट फिट करना चाहते हैं तो trying different combination of polynomials will help, क्योंकि आपका ग्रेडियंट डिसेंट वेट्स को एडजस्ट करते 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 आपको यहाँ तक ले आएगा कि आप ठीक फिट कर लेंगे। बट द क्वेश्चन दैट विल रिमेन विद यू इज कि आपने ओवरफिटिंग तो नहीं करनी, व्हिच इन ऑफन केसेस कैन बी द प्रॉब्लम, तो आपको उस ओवरफिटिंग को भी अवॉइड करना है। सो यू डोंट वांट टू हैव underfit or high bias, you don't want to have overfitting or high variance, you want to have a model which is just light, bright and generalized for the examples, and that can be used for predictions in the future. Now, having defined the problem of overfitting, the next important question that comes with us is how to address overfitting. हम overfitting को address कैसे कर सकते हैं, right? हमें ये बात कैसे मालूम होगी कि हम overfit नहीं कर रहे? So we need to have some kind of mechanism, some kind of method that can help us prevent overfitting. So for example, अगर आपके पास ये डेटा है, right? और जैसे आप इस ग्राफ को देखें तो आप ये कह रहे हैं कि ग्राफ बहुत ज़्यादा वेरिएशंस शो कर रहा है और अननेसेसरली अपने आप को फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहा है, and you say that this is a kind of overfitting situation, right? Now, one way to avoid overfitting is collect more training data. आप कोशिश करें कि आपको ट्रेनिंग के लिए मजीद डेटा मैसर आ जाए। मिसाल के तौर पे इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर कुछ मजीद एग्जांपल्स अगर आप ऐड करते हैं, जैसे पहले थोड़ी सी एग्जांपल्स थी, अब आपने कुछ मजीद एग्जांपल्स में ऐड कर दी हैं। उन एग्जांपल्स ने आपको एडवांटेज क्या दिया है कि आपका जो कर्व है वो रिलेटिवली सीधा हो गया, क्योंकि दरमियान में जो मिसिंग प्लेसेस थी जहाँ पर वो मॉडल अननेसेसरी डांस करता नजर आ रहा था, वहाँ चूंकि आपने फिल इन कर दिया और गैप्स को ट्रेनिंग एग्जांपल्स के साथ, तो उसको इमीडिएट हुक नजर आई तो उसकी तरफ चला गया, राइट? सो वन वे टू अवॉइड ओवरफिटिंग इज टू कलेक्ट मोर ट्रेनिंग एग्जांपल्स such that the gaps in your data points become less and the margin for the model to like kind of overfit becomes less as well, right? So this is one of the situations, one of the addressing of the problem that can be done, that you collect more training examples that can help you avoid overfitting. Now the problem is that in most situations it is not easy to get more data. अक्सर आप डेटा कहीं से ले रहे होते हैं और वो डेटा जितना होता है वो एक बार आपको मिल गया होगा और आपको उसी टाइप का डेटा मजीद नहीं मिल रहा होता। So in most practical situations, you will face this issue that more training data is not available. तो जब ज़्यादा training data available नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? So like if we say that collecting more training examples
is a potential solution to overfitting that is only possible when more data is available. And as I said, in most cases more data will not be available. अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? So another way to cope with overfitting is feature selection. So we select features to include or exclude. Right? First करें, हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं. हमारे पास फर्स्ट करें साइज है, बेड नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, एज ऑफ द हाउस है, एवरेज इनकम ऑफ द नेबरहुड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. राइट? सो आपके पास फर्स्ट करें 100 फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स. ठीक है? एंड यू आर प्रेडिक्टिंग लाइक बेसिकली प्राइस बेसिस ऑन द बेस ऑफ लाइक दिस. राइट? सो बेसिकली अगर आप सारे फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सारे फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं तो इट इज लाइकली कि आपके पास जो डेटा के अंदर वेरिएशंस रिक्वायर्ड हैं वो लिमिटेड है. व्हाट आई मीन टू से इज, फर्स्ट करें आपके पास 100 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं और आपके पास 2 फीचर्स हैं. ठीक है? तो हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 फीचर्स और 100 ट्रेनिंग एग्जांपल्स, अच्छा कुछ ना कुछ फीचर्स की वैल्यूज पर वेरिएशंस होंगी एंड 2 फीचर्स अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे. फर्स्ट करें आपके पास 100 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं और 100 ही फीचर्स हैं, तो फिर उनके कॉम्बिनेशंस में वेरिएशन कितनी होगी? लाइक वी कैन टेंड टू से दैट यू हैव too many features but very few examples. In order to really capture the trend of 100 features, then maybe you should have 1,000,000 examples as well, so that we are really able to understand the generalization of the trend in the data. Right? So अगर आपके पास फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मोस्ट ऑफन आपके पास जो डेटा इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ फीचर्स होगा वो कदरे इनसफिशिएंट हो सकता है. लाजमी नहीं है लेकिन इनसफिशिएंट हो सकता है. राइट? सो अगर आपके पास इनसफिशिएंट डेटा होगा तो इट मे ओवरफिट. हमारा पर्पस तो जनरलाइजेशन है, तो हो सकता है कि वो जनरलाइज ना कर सके. राइट? अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसमें से फीचर सिलेक्शन करें. आप सारे फीचर्स को इस्तेमाल ना करें, आप अपनी इंट्यूशन से ये डिसाइड करें कि ये जो फीचर्स लिस्टेड हैं इनमें से कौन से फीचर ज़्यादा अहम हो सकते हैं. इन फीचर्स की अहमियत को जानने के लिए आप उनके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं कि लाइक इस फीचर का मेन क्या है, मैक्स क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है. उससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये फीचर कितनी गली चीज़ें शो कर रहा है. राइट? फर्स्ट करें एक फीचर है विच सेज लाइक कि क्या लाइक सी शोर इस हाउस के करीब है. फर्स्ट करें कि आपके पास 1,000,000 एग्जांपल्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे हाउसेस की हैं जो सी शोर के करीब हैं. उन सब की वैल्यू क्या होगी? 1. राइट? लर्निंग में इस फीचर की कोई कंट्रीब्यूशन होगी? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग एनी वेरिएशन एट ऑल. फर्स्ट करें कि नहीं 50% घर जो है वो सी शोर के करीब है, 50% करीब नहीं है, इसकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी ज़्यादा होगी. फर्स्ट करें कि आपका फीचर ये है कि आपका सी शोर से फासला कितना है. ठीक है? और वो फासला किलोमीटर्स में दिया होगा. तो आपके पास फर्स्ट करें 100 डिफरेंट वैल्यू है जो 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के दरमियान है. ये और ज़्यादा वेरिएशंस दे रहा है, ये और ज़्यादा वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है. राइट? तो फीचर्स का एनालिसिस करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फीचर कितना यूजफुल पॉसिबली हो सकता है. राइट? वन वे ऑफ डूइंग इट. सो आप लाइक इक्वेशन से कुछ फीचर्स सेलेक्ट आपने करी, साइज, नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड एज ऑफ द हाउस. मे बी ये 3 फीचर काफ़ी मुनासिब हैं हाउस प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए. राइट? सो लाइक वन पॉसिबल, ये जो चीज़ मैंने कही है ये हर चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि आप फीचर सिलेक्शन करते हैं. फीचर सिलेक्शन कैसे की जाती है वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. राइट? बट लाइक वन पॉसिबल वे टू अवॉइड ओवरफिटिंग इज टू लाइक इंक्लूड और एक्सक्लूड सम फीचर्स. Right? One disadvantage on the other hand of like feature selection is that by excluding some features you may lose some useful information as well that may be of some value to your model. Therefore, feature selection is a critical task, and if we are like doing any kind of feature exclusion at any point in time, we should be doing it very carefully. We will talk about like feature selection next course. Okay, then finally the third
And generally most reliable and most used method, most preferred method of like avoiding overfitting is regularization, right? So before we get on with regularization, let me just